areas. So when we talk about automation, I just wanted to know how many of you are currently working in software industry, or any one of you is like fresher or something in this session. If anyone is fresher, just unmute and let me know that you are fresher. Else I'll consider rest are working in automation industry, or sorry, testing industry. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I am fresher. Yes, ma'am. Okay, Vivek, you are too fresher. Fresher means you are you have already joined the organizations, or you are still searching. I'm completely Still new in this searching, ma'am. course. Okay, completely new in this course. Okay. Anyone else? Okay. So rest of the people, now the question goes to you. When you want to join this course, what are your aspirations? Why you are looking for API automation? Anyone? Hello. Yes. Ashita, what you said? What's your name? Full name? I cannot share my full name. I can share only my first name as per the testometer rules. Okay. So guys, anyone? Why you want to join API testing course? I think Nipun. Nipun is back, so let's hear from Nipun. I have basic idea, but want to know the automation part of API. Okay. Means general knowledge I have. I worked on Postman, but I don't have automation part knowledge. Okay, so And you basic terminologies also. okay, but then are you currently using? Yes, I'm using Postman now in Okay, so project. you're currently using Postman. Okay. Is my voice breaking for everyone? It's only Ranjan. Rohit, it's I think for you or everyone. Everyone, can you hear my voice, guys, or it's breaking for everyone? So you're audible. Okay. Right, just check out your network, please. Okay, so let's start with this automation course that we will be having. So yes, Nipun, you're correct. Basically, when we talk about API automation, it's not just a Postman where we need to have a knowledge. Okay, because Postman is a tool which we are using to perform some day-to-day activity when it comes to API automation testing, right? But Postman requires many information, and that is being part of the theoretical section of API. So when you test any API, you should know what exactly APIs are, how these APIs are working, what are the basic fundamentals of API, what exactly API does, or how crucial API plays the role when it comes to automation testing. Anyone is having idea why this API testing started booming into the market? Because in couple of years back, there was no concept called API testing. Everyone was doing only UI testing, and still we are doing, many of the companies still does UI testing only. Now all the organizations slowly started moving into API testing. Anyone is having idea why so? हम लोग अभी एपीआई टेस्टिंग इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 5 6 साल पहले एपीआई टेस्टिंग मार्केट में इतना बूमिंग नहीं था जितना अभी है. अभी आप लोग कोई भी जॉब प्रोफाइल खोल के देखो, हर एक जॉब प्रोफाइल में एपीआई टेस्टिंग लिखा ही होता है. एनी आइडिया?
सो अभी जब हम लोग एपीआई टेस्टिंग करते हैं, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डूइंग एपीआई टेस्टिंग इज, सबको पता है, सिंस वी आर अ टेस्टर, द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, टू फाइंड द बग्स एज अर्ली एज पॉसिबल. Okay, many a times, since API is a backbone of every application, or API is a actually the part where code persists, right? So if you do the API testing, because API gets ready than the UI, API has to, developer starts developing API as soon as they get the user story. Once they get the user story, they start coding the things. Whatever they code is a part of API. Okay, so if you get an API well in advance for a testing purpose, you can find the problems exist in the code, real code problems. Okay, second, when you get something for testing from UI, the UI testing is limited. क्यों? क्योंकि UI टेस्टिंग में हमारे पास वेब एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स के ऊपर ही हमें काम करना पड़ता है. अगर एलिमेंट में ड्रॉप डाउन है और ड्रॉप डाउन में 4 वैल्यूज है, तो तुम 4 में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो. अगर तुम्हें एक्सप्लिसिटली कोई 5वीं वैल्यू के साथ टेस्ट करना है, हम लोग वो नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो वैल्यू ड्रॉप डाउन में होती ही नहीं है. अगर वैल्यू है ही नहीं ड्रॉप डाउन में, तो हम लोग उसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते. बट एपीआई टेस्टिंग में हमें सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ता है फ्रॉम बैक एंड. एंड व्हेन वी आर हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम बैक एंड, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो बैक एंड का डेटा है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग. आई कैन चेंज द डेटा फ्रॉम बैक एंड, और जो मुझे चाहिए, मुझे फील्ड में डेटा रखना है, एम्प्टी रखना है, नेगेटिव वैल्यू देनी है, पॉजिटिव वैल्यू देनी है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होता है और आई कैन प्रोवाइड द वैल्यूज एज पर माई नीड. और अगर ये चीज मैं कर सकती हूँ बैकएंड से, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इश्यूज मिलेंगे इन द कोड, जो मुझे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट एंड में ना मिले. ओके, सो इसी के लिए हम लोग बैकएंड टेस्टिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं. व्हेन आई से बैकएंड टेस्टिंग, इसमें 2 फ्लेवर आते हैं. एक होता है एपीआई टेस्टिंग, सेकंड होता है डेटाबेस टेस्टिंग. डेटाबेस टेस्टिंग अभी भी बहुत सारे लोग एक तो यूआई से अचीव करने की कोशिश करते हैं या एपीआई से, क्योंकि एपीआई अल्टीमेटली डेटाबेस के साथ ही कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस में ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है. सो व्हेन आई कॉल इट डेटा एपीआई टेस्टिंग, हमारा डेटाबेस टेस्टिंग भी अचीव हो जाता है फ्रॉम बैकएंड. ओके, तुम्हें उसके लिए स्पेसिफिकली एसक्यूएल में जाके क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपीआई जो तुम हमारे पास होते हैं डेवलप किए हुए, वही वो काम करते हैं. बैकएंड में जाके डेटाबेस में डेटा डालना और फ्रंट एंड में उसके लिए, और अगर तुम्हें डेटा लेना है तो भी तुम्हारा एपीआई रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डेटा लेके आता है और तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता है. सो एपीआई टेस्टिंग बिकम्स क्रूशियल नाउअडेज, मेनली बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एपीआई टेस्टिंग. सबसे पहले, you can start early testing. Second, you can start actual testing the code. Okay. Third is, यहाँ पे कोई UI नहीं है, so you can manipulate the data from backend. Okay, API में तुम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो और रियल टाइम पे एक्सेप्शंस कैसे हैंडल किए हैं डेवलपर्स ने, वो देख सकते हो. थर्ड, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी तुम लोग अचीव कर सकते हो यूजिंग एपीआई टेस्टिंग. उसके बाद जैसे ही हमारे तुम लोगों को हमें ज्यादा से ज्यादा एपीआई में इश्यूज मिलेंगे, उतने हमारे कोडिंग में लूप होल्स थे. सो हम लोग उसका एक डेवलपर्स को बता सकते हैं कि दीज आर द लूप होल्स इन योर कोड विच डेवलपर्स विल फिक्स, और लेटर ऑन हमें इश्यूज जितने ज्यादा हम लोग बैकएंड से ही निकाल के डेवलपर्स को दे दें, उसका मीनिंग है उतना कोड रिफाइन होगा, उतना कोड रिफैक्टर होगा, और उतने हमारी कोड की क्वालिटी अच्छी होगी. जैसे हमारी कोड की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारे एप्लीकेशन की भी क्वालिटी अच्छी होगी. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एपीआई टेस्टिंग इन अर्ली स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग लाइफ साइकिल. सो हम लोग जब एपीआई टेस्टिंग चालू करेंगे, वी विल स्टार्ट द एपीआई टेस्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. ओके, स्क्रैच का मीनिंग, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एपीआई टेस्टिंग होता क्या है और क्यों करना है इतना ही पता है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मैम, हम लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग किया है, जॉब स्विच करना है और अभी हम लोगों को एपीआई सीखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे एपीआई की डिमांड है, इसके लिए हम यहाँ पे हैं.
कोई लोग हैं जैसे निपुण सेड, ही नोज बेसिक थिंग्स अबाउट पोस्टमैन, बट उसको ऑटोमेशन सीखना है, सो इसके लिए हम लोग एपीआई, उसको एपीआई सीखना है. सो देर आर मेनी पीपल हु डजंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली टेस्टिंग इज, लाइक विवेक एंड तेजस, और उनको सीखना है. सो वी विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, जहां पे हम लोग चेक स्टार्टिंग विद द बेसिक concept or basic definition of API testing, वहां से we will start the journey. Okay, so I will share my screen and let me open the API testing का syllabus that we will be going to cover. So can you see my screen, guys? Let me know once the screen is visible. आप में से कोई कंफर्म करेगा स्क्रीन विजिबल है या नहीं? Visible. Yes, it's visible. Visible है? Okay. So we will start with the basic concepts of API testing, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली एपीआई सेक्शन की पूरी सीरीज है ना, ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 सेक्शंस में कवर अप की है. छोटे छोटे सेक्शंस हैं, बट हर एक सेक्शन अपने में एक कंप्लीट पार्ट है. सो सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिस चीज को हम लोग एपीआई बोलते हैं, कहीं कहीं पे कुछ लोगों को वेब सर्विसेज भी सुने हुए होते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली वेब सर्विसेज आर, व्हाट एग्जैक्टली इज एपीआई, उसमें डिफरेंस क्या है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, उसके बाद क्रोड ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होते हैं, कौन से एचटीटीपी मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड्स क्या है, और बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स क्या है रेस्ट एश्योर्ड या रेस्टफुल सर्विसेज के, जिसपे हम लोग बोल सकते हैं कि वो वेब सर्विस रेस्ट सर्विस है. सो ये हम लोग देखेंगे सेक्शन 1 में. सेक्शन 2 पूरा का पूरा, सो सेक्शन 1 विल बी फोकस्ड ओनली ऑन थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एपीआई टेस्टिंग. सो एपीआई टेस्टिंग होता क्या है, उसके बाद सोप क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, क्राउड ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्टेटस कोड क्या होते हैं, एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, एपीआई टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रिंसिपल्स क्या है. सो पूरा का पूरा थ्योरी विल बी गेटिंग कवर्ड इन द सेक्शन 1. सेक्शन 2 इज मेनली फोकस्ड ऑन जेसन. बहुत सारे लोगों ने अभी देखा है रिसेंटली, जेसन इज आल्सो वन ऑफ द टेस्ट डेटा, जिस फॉर्मेट में टेस्ट डेटा को सेंड किया जाता है अक्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, सब जगह पे. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जेसन में क्या क्या है. तो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज जेसन, एक्सएमएल क्या है, जेसन क्या है, एक्सएमएल और जेसन का डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक्सएमएल इज अगेन अनदर कंसेप्ट जिसके साथ डेटा शेयर होता है. ओके, सो हम लोग एक्सएमएल भी देखेंगे, जेसन भी देखेंगे, दोनों में से डिफरेंस भी देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कुछ एक्सएमएल्स की, हम लोग खुद जेसन बनाना सीखेंगे, जिसमें वी विल स्टार्ट विद द बेसिक क्रिएशन ऑफ जेसन. सो हम लोग अपने जेसन्स कैसे खुद बनाते हैं, जेसन्स को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, जो कि डेवलपर्स ने बनाए होंगे, जेसन का स्कीमा क्या होता है, और जेसन में से अगर मुझे किसी की वैल्यू ढूंढनी है तो मैं उसको कैसे ढूंढूंगी यूजिंग जेसन पाथ, ये भी देखेंगे. सो जेसन का बेसिक से लेके, जेसन क्रिएशन से लेके जेसन को रीड करने तक हम लोग सब करेंगे इसके अंदर, और साइमल्टेनियसली हम लोग उसी के साथ एक्सएमएल भी देखेंगे. सो 2 डेटा टाइप हम लोग कवर अप करेंगे यहाँ पे, जेसन प्लस एक्सएमएल. उसके बाद देयर इज अ टूल कॉल्ड स्वैगर. ये बहुत सारी जगह पे एपीआई टेस्टिंग में यूज होने वाला टूल है, जहाँ पे तुम्हें एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है. सो वो स्वैगर का टूल क्या है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, और रियल लाइफ टाइम में जैसे डेवलपर्स एक्चुअल में स्वैगर से डेटा लेते हैं, हम लोग भी सेम वे फॉलो करेंगे. ओके, सो हम लोग स्वैगर को भी देखेंगे. सो फर्स्ट टूल जो हम लोग सीखेंगे इसमें वो होगा स्वैगर. सेकंड टूल होगा हमारा पोस्टमैन. स्वैगर में कुछ लिमिटेशंस है, जिसके अंदर हम लोग एपीआई टेस्ट तो कर सकते हैं, बट हम लोग कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, कोड नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल्स नहीं स्टोर कर सकते हैं, हमने जो डेटा एपीआई को कॉल दिया है वो प्रिजर्व नहीं होता है उसका रिस्पॉन्स. ये सब लिमिटेशंस की वजह से वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट द कोडिंग यूजिंग टूल कॉल्ड पोस्टमैन. कौन सा?
पोस्टमैन। सो हम लोग पोस्टमैन को इन डिटेल में देखेंगे। पोस्टमैन को इंस्टॉल कैसे करना है, कलेक्शंस कैसे लिखने हैं, रिक्वेस्ट कैसे अंडरस्टैंड करनी है, पोस्टमैन का पूरा टूल मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हाउ यू आर गोइंग टू डाउनलोड द प्रैक्टिस एपीआई, जितने भी CRUD ऑपरेशन है या जितने भी HTTP मेथड्स है, हर के लिए हम लोग कोड करेंगे और हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखेंगे यूजिंग पोस्टमैन। उसके बाद हेडर्स कैसे ऐड करेंगे, पोस्टमैन का कलेक्शन कैसे रन करेंगे, पोस्टमैन में वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, उसके बाद एपीआई चेनिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम लोग इन डिटेल पोस्टमैन में देखेंगे। सो पोस्टमैन इटसेल्फ टेक्स ऑलमोस्ट, ये पूरा फर्स्ट 3 जो सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 5 तक जितना भी है विथ पोस्टमैन, पैरामीटराइजेशन, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, ये पूरा फर्स्ट 5 का ही सेक्शन हम लोगों का ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लेता है। ओके फिर जैसे हमारा पोस्टमैन खत्म हो जाएगा, वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ रेस्ट एश्योर्ड कोडिंग, जहां पे हमें चाहिए जावा का बेसिक नॉलेज, ओनली बेसिक नॉलेज, बहुत हाई फंडू नहीं। ओके और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जैक्टली रेस्ट एश्योर्ड क्या है, पोस्टमैन में क्या डिपेंडेंसीज थी या पोस्टमैन के क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें रेस्ट एश्योर्ड को यूज करना पड़ रहा है। सो हम यहाँ पे बेसिक जावा देखेंगे, रेस्ट एश्योर्ड की पूरी लाइब्रेरी देखेंगे, इसमें जितने भी मेथड्स प्रोवाइडेड है जो हमें हेल्पफुल है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ओके फिर एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे पोजो क्लास का, जो स्पेसिफिकली क्लासेस बनाए जाते हैं टू हैंडल हमारा जेसन डेटा, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ये सब कुछ होने के बाद हम लोग टेस्टएनजी का फ्रेमवर्क देखेंगे। सो अभी तक हम लोगों ने 2-3 टूल कंप्लीट किए, 1 स्वैगर, 2nd पोस्टमैन, 3rd रेस्ट एश्योर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्टएनजी का फ्रेमवर्क, जहां पे मैं तुम लोगों को टेस्टएनजी पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि टेस्टएनजी का फ्रेमवर्क है क्या, यूज क्यों करते हैं, लिसनर्स क्या होते हैं उसमें से, टेस्ट ग्रुप क्या होता है, टेस्टएनजी की XML क्या होती है, असर्शंस कैसे लिखते हैं, पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं, डेटा एक्सटर्नली कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम लोग टेस्ट केसेस को स्किप कैसे कर सकते हैं। सो पूरा टेस्टएनजी का फ्रेमवर्क हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा टेस्टएनजी का फ्रेमवर्क हो जाएगा, देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड एक्सटेंड रिपोर्ट। टेस्टएनजी के खुद का रिपोर्ट भी होता है, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर हमें कुछ एक्सप्लिसिटली करना है अलग से एक्सटेंड रिपोर्ट में, तो हम लोग करेंगे यूजिंग एक्सटेंड रिपोर्ट। फिर हम लोग लॉगिंग फ्रेमवर्क देखेंगे जो होगा log4j। उसके बाद मैवेन एंड जेंकिंस देखेंगे कि हम लोग CI/CD में कैसे ऐड कर सकते हैं, गिट की रिपोजिटरी देखेंगे, CI/CD के लिए जेंकिंस देखेंगे, और फिर मैवेन भी एक्सप्लेन करूंगी। और जैसे तुम्हें ये पूरे बेसिक कंसेप्ट समझ में आते हैं, देन वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड फ्रेमवर्क क्रिएशन। सो फर्स्ट 1.5 मंथ हम लोगों का पोस्टमैन ने लिया। उसके बाद वाला जो हमारा 1 मंथ है वो हमारा ये पूरा थ्योरी लेता है, और कि फिर लास्ट, सो हमारे 2.5 मंथ हो गया, और फिर लास्ट के 20 डेज जो है वो हमारा पूरा लेगा रेस्ट एश्योर्ड का फ्रेमवर्क क्रिएशन। सो ये ऊपर के जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किए हैं उसको अल्टीमेटली हम लोग कन्वर्ट करेंगे हमारे रेस्ट एश्योर्ड के फ्रेमवर्क में। किसमें? रेस्ट एश्योर्ड के फ्रेमवर्क में। एंड देन विल क्रिएट अ रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग रेस्ट एश्योर्ड यूज करेंगे, मैवेन जेंकिन कॉम्बिनेशन मैवेन यूज करेंगे, log4j यूज करेंगे, टेस्टएनजी यूज करेंगे। ओके पोजो क्लासेस होंगे उसके अंदर। उसके बाद एक्सटेंड रिपोर्ट होगा और रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन होगा। ये सबका मिलके हमारा फ्रेमवर्क बनेगा, और ये फ्रेमवर्क हम लोग CI/CD के पाइपलाइन में डालेंगे यूजिंग जेंकिन्स, और हमारी पूरी रिपोजिटरी जो जाएगी वो होगी गिट पे। सो गिट एंड गिट हब के साथ हम लोग सब देखेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा करिकुलम होगा। इट गोज फॉर 3.5 मंथ्स to 4 मंथ्स। ओके यहाँ पे जब तक हम लोग स्वैगर तक, जब तक हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, इट्स ओके अगर तुम मोबाइल से लॉगिन करते हो। जैसे हम लोग सेक्शन 2 से चालू करेंगे, सबके पास लैपटॉप होना, एटलीस्ट लैपटॉप नहीं है तो नोटबुक एंड पेन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे कुछ
एक्सरसाइजेस चालू हो जाते हैं। ये पूरा जो है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस है, यहाँ पे कुछ थ्योरी नहीं होती है। सो हमें प्रैक्टिकल के लिए ये सब चीजें इंस्टॉल चाहिए तुम्हारे मशीन पे। सो ऑलवेज रिकमेंडेड है कि पहले वाला सेक्शन इफ यू लॉग्ड इन यूजिंग मोबाइल दैट्स ओके, बट फ्रॉम सेक्शन 2 ट्राई टू लॉग इन विथ योर लैपटॉप, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये था अबाउट सिलेबस। नाउ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन ऑन दिस? द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लेना। कोई भी क्वेश्चंस नहीं? सबको क्लियर है जो मैंने एक्सप्लेन किया? Madam, the session will be conducted in English or Hindi, madam? It's totally depend how the flavor you wanted, because if the person can't understand English, Hindi, then the session will be conducted in English. Okay, madam. Ideally, 90 to 98% it's in English, because if only I speak English, then only it will be possible for you to give answers in English, right, during your interviews. If I speak in Hindi, it will be difficult for you guys to give answer, right? Yes, madam. I want it in English only. That's why. Basically, then yeah, so maximum time I always try, suppose, but if some person asks me a question and he is not able to understand properly the answer, then that time I try, Raghav, to give answer mostly in their local language or the language that person knows. But 90 to 98% my all the sessions that I have with Python series, Python with Selenium, or my API series always goes with English. What are the job opportunities, madam, after learning this API testing course? How it will be in the market current position? See, market is currently booming with API. Okay, if you have seen the since if you can check out the Naukri, and if you can open any of the sites where you can find out a job, you can see API is going to be the primary requisite. Now it becomes everywhere. Okay, so Okay. if you really do a proper hands-on API, if you attend regularly the sessions, okay, I am pretty sure you will be able to answer everything related with API during in the interviews. Is a weekend batch, madam, or daily batch, No, madam? daily it is not possible for me because I have an office, right? Okay. And then daily I have a batch for Python and Selenium, which generally runs in the night 9 to 10. Okay. So I cannot take on weekdays, but it will be weekend, most probably on Saturday, Sunday, 8 to 10:30. AM only, na, madam? Yeah, AM only. So that you guys are free after 10:30. Okay, madam. Fees are installment wise we can pay, madam, or at a time we need to pay, madam? I think Kirti is there. So Kirti, just provide, you have a testameter's number, right, Raghava? Yes. So Yes, you yes. can check out with Kirti. Kirti will give you the guidance on fees and payment. Sure, madam. Thank you. Anything else from anyone? You understood the concepts, right, Raghava? I mean, the one which I explained, because it was in between Hindi also. Understood, madam. Okay, fine. Okay.
So if not, let me just check out with few of you that what exactly is your profile. So we have Ashlesha. Ashlesha, can you just unmute yourself, please? Yeah, hi ma'am. Good morning. So could you please explain, Hello, could you can you please hear me? introduce? Yeah, I can hear you. Hello. So I just wanted, hello, am I audible? Yeah, now you are audible. Okay, and nothing more, Ashlesha. I just wanted to know from everyone what exactly currently you are doing and how much experience you have in the industry, nothing else. Oh, okay, okay. So I have total 9 years of experience in software testing. Mm-hmm. Uh, and for I'm learning, and my actual skill set is a functional testing, validation lead, Mm-hmm. and I have performed APIs, but now there is a huge gap. When I see Postman tool now, the Postman tool is upgraded. True. I have performed API testing before, but only basics like just get and the basic commands I have performed, nothing else. So Okay. I'm here for to learn more. And then you are comfortable on weekend batch or weekdays batch? Actually, I want weekend batch only because on weekdays it's not possible for me. True, true. Okay, yeah. Thank you, Ashlesha. Yeah. We have Abhijit. Abhijit, could you please unmute yourself? Just maybe introduction about you and your profile. Yeah, currently I'm working at Ambit Software as a QA lead, and I have a project based on CRM. I have some part of exposure on the API part, but majorly I worked on manual and functional kind of thing. Yeah. So I wanted to upgrade on the API automation part side. Okay, and then you are okay with weekend or weekdays? Yeah, I'm okay with the weekend batch. You're okay with weekend. Okay, yeah. Thank you, Abhijit. Thank you. We have Devyani. I think there was someone from Devyani's side, but I don't know. Nilima. Yeah, hi, ma'am. Hi. Yeah, actually, I have 4.5 years of experience in the automation testing. Mm-hmm. Basically, I work for the UI automation. And for my career growth, I want to learn about the API testing. So you are doing in Selenium with Java Yes, combination? yeah, Okay. yeah, Selenium with Java. And also, I want to know like if we want to like this course is for the 3.5 to 4 months, right? Mhm. So it's a Almost long 3.5. duration. Yeah, so it's a long duration. So is it possible like for the daily batches in the night? Daily batches is what I said, Nilima. I already have a batch from 9 to 10. And I generally come home by 7. So I have a daughter which is of 7 years and I need to take care of her schooling also, right? So it's Okay. not possible for my weekdays with me. So I generally have only one batch on a weekdays, which is generally Python and Python combination, Python with Selenium. That is running since a longer time with me on the same time, and since many batches I'm taking on for that only. Weekend I specifically keep for API testing. Okay. And one more question I have, like, And then on weekend is like, see, if you take on weekdays, you will cover up for 5 hours, right? So anyways, mhm. weekend we are going to cover up for 5 hours because 2.5 hours Saturday, 2.5 hours Sunday. So Okay. it is going to be one on the same. Yeah, yeah, okay, that's fine. And I have one more question, like, will you help for the for the placement or Yeah, any yeah, like, yeah. That testometer already does for many of the candidates. yeah, like a demo interviews or this? Demo interviews, but I what generally the criteria of here is like I generally whenever we are covering up any of the section or any of the concept, that time itself I let you know guys what could be the possibility of asking interview questions or what different type of interview questions could be asked on that particular topic to you.
Okay, and then I share a document. It is having almost 60 plus interview questions that can be asked during interviews, so you can just need to go through them. But if you guys want, maybe I generally took a viva also between the sessions, just any one day or any middle of any of the session. I just take a pause for some time, and then I ask a questions. It's again on a interview questions on the covered syllabus. So we do that. Okay. And also, will you provide any certificate after completing this? Yeah, certification will be there from Testometer. Okay. Yeah. Yeah, that's thank you. Welcome. And Nipun, I already know. Priyanka. Thank you, Nilima. We have Priyanka. Priyanka, can you unmute? I know Raghav. Raghav already spoke about. Tejas and Vivek are fresher, right? Both of them. I mean, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Priyanka, could you please unmute yourself? Good morning, ma'am. Good morning. Actually, I have 4 and 5 years experience in manual testing. So Okay. I want to upgrade in The skills. API testing as well. Yeah. Okay, and morning is fine with you, right? I mean, weekends. Yes, we can. Vivek and Tejas, thanks, Priyanka. Vivek and Tejas, how it goes? Morning is okay with you guys? I mean, weekends? Okay, ma'am, no problem. Okay, so everyone is okay with this time. Yeah, sure. Anyone has any questions, please drop me a message. I think, Kirti, can you just create a WhatsApp group for these people and include me as well? So everyone will be having my number, so they will ping me. So anyone has any questions, please reach out to Testometer. Kirti has already dropped the details. And maybe, is it okay if we start from next weekend or so? Everyone is Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay? Yes, ma'am. Okay, fine. Then I'll talk to Kirti, and then Kirti will drop you guys a message, the timings and everything. Okay? Ma'am, I have one question. Sorry for Yes, Nilima. yeah. So for all this rest assured, and this postman, so is there practically or only theory you are going to? No. That is what I said, right? Theory is only section 1. Okay. The rest is going to be the practical. That's why I told everyone to have laptops. Okay. So assignments are there? Right? Assignments will be there, and then you have to finish the assignments. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So see you on next weekend, guys. Bye-bye. Have a nice day. Have a happy weekend. Bye-bye, guys. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you, ma'am.